Today, in this video, I am going to discuss about the new chapter, and that chapter is electromagnetic waves. And first thing, what is an electromagnetic waves? So, the waves in which electric and magnetic fields changes are very sinusoidally in mutually perpendicular directions and also perpendicular to direction of propagation of wave. And such wave would travel in free space or vacuum with the speed of light. Or simply you can say an electromagnetic wave is that wave in which the electric and magnetic field are changes sinusoidally in the perpendicular direction and also perpendicular to direction of propagation of wave. And the such type of the waves travel in free space or vacuum with the speed of light. And this wave is called what here electromagnetic wave. इसका मतलब electromagnetic waves में क्या लिया हमने electric field and magnetic field which is always perpendicular to each other as well as perpendicular to direction of propagation of wave. जैसे हम करें अगर हम ले लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए वाई एक्सिस के लॉन्ग है, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के लॉन्ग है एंड प्रोपगेशन ऑफ वेव अलोंग एक्स एक्सिस है. So in this case electromagnetic waves would travel in the vacuum or free space with the speed of light. And Maxwell told that the electromagnetic waves would travel with the speed of light in free space or vacuum. So light itself is an electromagnetic wave. Light खुद क्या है? एक electromagnetic wave है. And electromagnetic waves are transverse in nature. Remember this, all the electromagnetic waves are transverse in nature. And the other example of electromagnetic waves are like what here? Like ultraviolet waves, gamma rays, X-rays, infrared rays. All these are what here? All these are the examples of electromagnetic waves. Now, the important characteristics of the electromagnetic waves. And under this, first characteristic is what here? The electromagnetic waves are produced by accelerated charge. This one is very important. How this electromagnetic waves are produced. So, electromagnetic waves are produced by accelerated charge. Second one, these waves do not require any material medium for the propagation. Third, these waves travel in free space with the speed of light, and that speed of light is almost 3 into 10 to the power 8 meter per second, and which is also given by the relation C is equal to 1 upon root mu naught epsilon naught, and this formula already I have given in the chapter magnetic effect of current. So, speed of light is also given by this expression C is equal to 1 upon root mu naught epsilon naught, and finally you can say light waves are electromagnetic. Now, fourth characteristic is what here? Electromagnetic waves are transverse in nature. Or already you know here, in electromagnetic waves, electric and magnetic field varies, and electromagnetic field are in electromagnetic waves, electric and magnetic field are perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of propagation of wave. So due to this reason here, electromagnetic waves are transverse in nature. And the next point, fifth property or fifth characteristic is what here? The variation in electric and magnetic field occurs simultaneously, and the fields acquire the maximum value, means electric field and magnetic field is changes simultaneously, and they acquire the peak value, means electric field and magnetic field will be acquire the peak value. Peak value is E naught and V naught at the same place and at same
Next characteristics, in free space, the electric and magnetic field in electromagnetic waves are related by C is equal to E by B. It means in electromagnetic waves, the magnitude or the ratio of magnitude of electric field to magnetic field, that ratio is equal to the speed of light. So simply you can say C is equal to E by B. But remember this here, E is magnitude of the electric field and B is the magnitude of magnetic field. The next seventh point is the energy in electromagnetic wave. Remember this electromagnetic wave is possesses the energy, and the energy in electromagnetic wave is divided equally between electric and magnetic field. It means the energy possessed by an electromagnetic wave is divided equally in electric and magnetic field. Next point is what here? Energy associated with an electromagnetic wave is given by this U is equal to total energy associated with an electromagnetic wave is given by U is equal to half epsilon naught E square plus half B square upon mu naught. Actually, this one is called what here? Energy density. Or you can say energy density or energy per unit volume in electric field, and this one is energy per unit volume in magnetic field, and their sum is equal to the total energy associated with an electromagnetic wave. Next point, ninth one, the electric field vector is responsible for the optical effect of an electromagnetic wave. किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऑप्टिकल इफेक्ट के लिए कौन रिस्पांसिबल है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर. सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज रिस्पांसिबल फॉर द ऑप्टिकल इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इज कॉल्ड लाइट वेक्टर. नेक्स्ट पॉइंट, 10th one, electromagnetic waves being uncharged. Given electromagnetic waves are produced due to the accelerated charge. लेकिन खुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कोई चार्ज नहीं होता. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बीइंग अनचार्ज, ड्यू टू दिस रीजन इट्स नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर किसी ऐसे रीजन में एंटर करे जहां पर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड है तो वो उसमें डिफ्लेक्ट नहीं होता है, बिकॉज इट डज नॉट पोजेस एनी चार्ज. नेक्स्ट वन, last one, the electromagnetic waves carries energy and momentum. Electromagnetic waves अपने साथ क्या लेके चलता है? एनर्जी भी और मोमेंटम. And since it carries the momentum, so it also exerts a pressure, and that pressure which is exerted by the electromagnetic waves is called radiation pressure, and that radiation pressure is calculated by using the formula P is equal to U by C, and already I have told you what is U, total energy possessed by that electromagnetic waves. And you know, light is a electromagnetic waves, and this electromagnetic wave means light waves carry the energy from sun to earth, and due to this reason the light is possible on earth. Now, next topic is electromagnetic spectrum, and which one is very, very important, and most probably the question which will be asked in the board exam is based on it here. Now, in the electromagnetic spectrum, these electromagnetic waves, which were discovered, that electromagnetic waves are like in the variation of the different range of the wavelengths, and this arrangement of all these according to their wavelengths, that one is called what here? This electromagnetic spectrum. Actually, in the electromagnetic spectrum, some one is lies in the visible part, which can be seen with the naked eyes, and some waves are lies in invisible part. You know, in the class 10th you have studied about this one. When a white light is passes through a prism, suppose if we will take a prism, and when white light is passes through it, you know this white light is break into how many colors? 7 colors: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. This one.
All these are called what? Visible light or visible color. It lies in your this visible region: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. And when white light is passes through a prism, then it splits into their constituent colors. And all these colors which lie in your this visible region is given by your violet pink. And also, as we go from violet to red, the wavelength increases, but the frequency decreases. इसका मतलब इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा और इसका वेवलेंथ सबसे कम। अब अगर हम इनके एक्सट्रीम कलर ले लें, if we will take their extreme color, suppose in the visible region, violet to red. So this lies in visible part, visible region. And as you go from violet to red, then wavelength increases and frequency decreases. इसका मतलब रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा विजिबल रीजन में और वायलेट की सबसे कम, लेकिन वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा और रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम। नाउ व्हेन यू गो अबव द रेड, अब ये इतने जो हैं वो तो विजिबल रीजन में थे। अब इसके बाद अबव रेड एंड बिलो वायलेट आपको जो भी मिल रहे हैं, मतलब ऑन आइदर साइड ऑफ रेड एंड वायलेट, द अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज लाइज इन योर इनविजिबल रीजन, मतलब वो नेकेड आई से नहीं और वो दिखाई नहीं दे रही। तो रेड के ऊपर क्या हो गया? रेड के ऊपर हो गया इंफ्रारेड। तो आप देखिए रेड के ऊपर है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स के बाद रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स। एंड ऑन अदर साइड वायलेट के बाद देखिए इसके नीचे क्या हुआ? अल्ट्रा वायलेट, फिर एक्स रेस और फिर ये हो गया गामा रेस। I want to want this one. If you will take all this set of the electromagnetic wave is called what here? Electromagnetic spectrum. And all these waves are arranged in a particular order of the wavelength. अब बताइए, हम जानते थे नीचे से ऊपर जब यहाँ गए थे तो वेवलेंथ क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। अब यहाँ से चलिए, इसका मतलब as we go from gamma rays to radio waves, then wavelength increases, wavelength increases, and when you will come from gamma rays to radio waves, wavelength increases but frequency decreases, but frequency मतलब गामा रेस की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा लेकिन वेवलेंथ सबसे कम। तो एज वी मूव फ्रॉम गामा रेस टू रेडियो वेव्स, वेवलेंथ इंक्रीजेस। इसका मतलब गामा रेस की वेवलेंथ सबसे कम, फिर एक्स रेस की उससे ज्यादा, अल्ट्रावायलेट की उससे ज्यादा, वायलेट की उससे ज्यादा, लास्ट में रेड आएंगे उससे ज्यादा, इंफ्रारेड उससे ज्यादा वेवलेंथ, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। So out of all these electromagnetic spectrum, whose wavelength is maximum? Radio waves की wavelength. Whose wavelength is minimum? gamma rays. लेकिन अगर frequency पूछे जाए तो as we comes from top to bottom, अगर हम इसको ऐसे कर देते तो आप कर देते frequency increases, frequency बेटर है यहाँ पे आप इसको ऐसे करिए। As we go from gamma to red, radio waves, wavelength increases, and when you will come from radio waves to gamma rays, then what here? Frequency increases. It means radio waves की frequency सबसे कम और gamma rays की frequency सबसे ज्यादा।
So in this way you can find out here whose wavelength is more or whose frequency is more. Remember this, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी. So in this electromagnetic waves, this one is what here given, order of the wavelength or the range of wavelength for these electromagnetic waves, which is given in meter. Here given 10 to the power minus 14 meter, means order of the wavelength 10 to the power minus 14, here 10 to the power minus 12, 10 to the power minus 10, 10 to the power minus 8, 10 to the power minus. This is the order of the wavelength range for the electromagnetic spectrum. Middle one, this very small region is shows what here, visible light. विजिबल लाइट जिसको हमने बताया ना कि वायलेट टू रेड तक जो आपको मिला है ये विजिबल रीजन है, विजिबल लाइट जो दिखती है. अब विजिबल लाइट के बाद अब इधर हम चले, इसका एक क्वेश्चन, ये तो हमको मिल गया विजिबल में. अब ये इसके बाद दोनों जो मिल रहे हैं राइट साइड एज वेल एज लेफ्ट साइड, बोथ इज लाइज इन इनविजिबल पार्ट ऑफ दिस स्पेक्ट्रम. ये इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की क्या है, इनविजिबल पार्ट. इनविजिबल पार्ट में जैसे यहां से वायलेट टू रेड हम करते हैं तो रेड के बाद हमको क्या मिलेगा, इंफ्रारेड. इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स के बाद रेडियो वेव्स. हाँ, इसी को और क्या कहते हैं, लॉन्ग वेव्स भी कह देते हैं इसको. एंड सपोज यहां तक हम वायलेट लेते हैं, वायलेट के बाद अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद एक्सरेज, एक्सरेज के बाद गामा रेज. इसका मतलब यहां से अगर हम स्टार्ट करें तो देखिए इसका वेवलेंथ ऑर्डर है 10 टू पावर माइनस 14. हाँ, बहुत कम है वेवलेंथ. और यहाँ पे आएंगे वेवलेंथ ऑर्डर 10 टू पावर 4, इतना ज्यादा हो गया. इसका मतलब एज वी मूव फ्रॉम गामा रेज टू रेडियो वेव्स, गामा रेज टू रेडियो वेव्स, the wavelength increases, but frequency is what here decreases. And as we move from radio waves to gamma rays, or simply you can say कि गामा रेज से रेडियो वेव्स में जाने पर वेवलेंथ तो बढ़ती है लेकिन फ्रीक्वेंसी घटती जाती है. तो और आप यू कैन सी हियर, नाउ यू सी हियर लाइक अल्ट्रावायलेट एंड दिस एक्स रेज, बट सम पोर्शन दिस एक्स रेज का देखिए ये पोर्शन कुछ अल्ट्रावायलेट में भी है और कुछ गामा रेज में भी है. इसका मतलब एक्स रेज के कुछ वेव्स या इस स्पेक्ट्रम के कुछ पार्ट हमारे अल्ट्रावायलेट रीजन में भी लाई कर जाते हैं और गामा रेज में भी लाई कर जाते हैं. So in this way also you can say like this microwave, some part of the microwave is also like in infrared as well as in what part here, radio waves here, which was also called what waves here, long waves. And remember this, penetrating power of a wave or penetrating power of a electromagnetic wave is depends on its frequency. फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उस वेव की पेनिट्रेटिंग पावर भी उतनी ही ज्यादा होगी. जैसे अगर गामा रेज आती तो गामा रेज क्या करेगी, हमारी बॉडी को क्या कर जाएगी, पेनिट्रेट कर देगी. क्यों, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है. इवन रेडियो वेव्स, a plenty of the radio waves is available in this atmosphere, in this space, but we are not bothered about this one. क्यों, क्योंकि इनके वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत कम है और फ्रीक्वेंसी बहुत कम होने के नाते इनकी पेनिट्रेटिंग पावर की क्या होती है, बहुत ही कम होती है. So all of you learn this order of this electromagnetic spectrum, in what order it is arranged here, either in increasing order of the wavelength or you can see here decreasing order of the frequency. So this one is the electromagnetic spectrum. And second thing also given, for each electromagnetic waves like this gamma rays, X rays, ultraviolet, infrared, microwaves, radio waves, so all of you go through your book and learn their wavelength range, frequency range, and its production, how it's produced, and property and uses. And in this way, you do for all. So what? Wavelength range, frequency range, production, properties, and uses. And three properties I am telling which is common for all these electromagnetic waves. तीन प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूं जो सबके लिए कॉमन है. जैसे राइट डाउन एनी थ्री प्रॉपर्टी ऑफ दिस पर्टिकुलर वेव, जैसे कहिए तीन प्रॉपर्टी किसी के लिए लिखिए तो ये तीन प्रॉपर्टी सब में कॉमन है. फर्स्ट वन इज व्हाट हियर, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर. सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, किस नेचर की है, ट्रांसवर्स नेचर की. सेकंड,
all electromagnetic waves travel in vacuum or free space with the speed of light. सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एयर या वैक्यूम में किस स्पीड से चलेंगी? स्पीड ऑफ लाइट. एंड थर्ड, all the electromagnetic waves does not affected by any electric or magnetic field. मतलब कि सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में अपने पाथ से रिफ्लेक्ट नहीं होंगी. क्यों? क्योंकि ये क्या है? अनचार्ज वेव है जो कि प्रोड्यूस होती है ड्यू टू एक्सेलरेटेड चार्ज, लेकिन इनके ऊपर वेव्स पे कोई चार्ज नहीं है. So in this you learn all this electromagnetic spectrum, their wavelength and frequency range, their production properties and uses. Several times in the board exam they simply ask कि arrange this one in the increasing order of wavelength or decreasing order of frequency, like this one. So they will be asked. For example, suppose gamma rays, microwaves, infrared, X-rays, ultraviolet. These waves are electromagnetic waves are given and oscillate arrange in increasing order of wavelength. इनको increasing order of wavelength में लिखना है. Increasing order of wavelength means we will start from the lowest wavelength, सबसे कम wavelength से सबसे ज्यादा. This one is increasing order. सबसे कम wavelength किसकी होगी इसमें? सबसे कम wavelength gamma rays. So first you will write here gamma rays. Then gamma rays के बाद अब किसकी wavelength होगी? Next one is X-rays. Next, ultraviolet. Next, ultraviolet के बाद infrared. And last one is what here? Microwaves. This one is what here? Arrangement of these electromagnetic waves in increasing order of wavelength. मतलब सबसे कम वेवलेंथ गामा रेज की, फिर एक्स रेज की, फिर अल्ट्रावायलेट, और यह मैंने क्या किया? सबसे कम वेवलेंथ से अब वेवलेंथ बढ़ती जा रही है इन सबकी, और सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी होगी? माइक्रोवेव की. सो दिस वन इज ए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ. इसको और क्या कर सकते हैं? सपोज इन द सेम क्वेश्चन आई एम सेइंग दिस वन, अरेंज इन decreasing order of frequency. Decreasing order of frequency. Decreasing order of frequency means सबसे कम फ्रीक्वेंसी से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी. तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? गामा रेज. यही ऑर्डर, चाहे इसको कहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी. मैंने बताया था वेवलेंथ अगर बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी. तो अगर ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, इसका मतलब ये क्या और है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर यूवी, फिर इंफ्रारेड, माइक्रोवेव. And several times in the exam they will ask simply like this. Yes, they will use some electromagnetic waves and ask to arrange in the increasing order of wavelength or increasing order of frequency or decreasing order of wavelength, decreasing order of frequency. So you will arrange this one. So in this way this chapter is over. So please all of you go through this topic what I have discussed in this chapter. You learn the characteristics of the electromagnetic waves and electromagnetic spectrum, and also for all the electromagnetic spectrum you learn its wavelength and frequency range, production properties and